Yes. So in our last to last and what we studied about Newton's first law of motion. So according to Newton's first law of motion, a body at rest remains at rest and a body in motion continues to be in uniform motion in a straight line unless and until it is acted upon by some external force, right? So this was Newton's first law of motion. By that, what we defined? We have defined the inertia, the inherent property of all the bodies by virtue of which they resist any change. Rest में है तो they want to remain at rest. If they are in motion, they want to remain in motion. In the third type of inertia was inertia of direction. If they are moving in rightward, their body tends to be in right direction. If they take a sudden left turn, they will fall towards right. So we studied about inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. That was in first law. In our last lecture, what we studied about second law. Second law tells us that whenever there is a change in momentum, that time we have to check that there is some external force, right? The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स लग रही है तो वो बॉडी पक्का एक्सेलरेट होगी, और एक्सेलरेट होगी मीन्स उसका मोमेंटम चेंज होगा, राइट? वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट मोमेंटम. व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम टेल्स अस द मेजर ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी. द वे वी हैव स्टडीड इनर्शिया फर्स्ट. इनर्शिया क्या होता है? द मेजर ऑफ मास कंटेन इन अ बॉडी. कोई भी बॉडी जितना हैवी होगी उतना ही उसका इनर्शिया ज्यादा होगा. Similarly, momentum is the measure of motion contained in the body. If a body is having more momentum, it means it can run fast. उसका motion ज्यादा है. If a body is having less momentum, it means it will have less momentum. How we define momentum last time? Momentum is mass into velocity. Momentum is mass into velocity, right? So the SI unit was kg meter per second. So today what we are going to discuss? We are going to discuss the applications of momentum, applications of second law of motion. Finally हमने क्या derive किया था? Rate of change of momentum is proportional to force. So ये rate of change of momentum से हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था? हमारे पास फॉर्मूला आया था F is equals to m into a. Force is equals to mass into acceleration was the formula that we studied last time. Children, in case you are not able to see the screen, please pin on the video. तुम्हें बड़ा दिखाई देगा and I hope you will be able to see it better, because hardly one or two were saying last time also and this time also. Please check, right? So force is mass into acceleration, right? And force is mass into acceleration also tells us F is equals to m. What is acceleration? V minus u upon t. Change in velocity upon time, right? If the velocity of the body is not changing, it means the body is not accelerating. अगर velocity same है तो acceleration 0. And if there is no change in the velocity, then no acceleration. No acceleration means no force. With second law, we also derived the first law. If you remember, using the second law, because second law is a real law of motion. Second law से we have also derived the first law of motion. Today we are going to, thank you. Yes, today you are going to study the applications. Second law of motion को हम डे टू डे लाइफ में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? व्हाट आर द एप्लीकेशन? हाउ वी कैन चेक कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है या नहीं हो रही? दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, राइट? सो विल गो टू एप्लीकेशंस वन बाय वन. बिफोर वी गो टू एप्लीकेशंस, तुम्हें ये रिलेशन याद रखना है कि फोर्स एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ टेल्स अस इफ एनी इवेंट, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी एक्टिविटी में अगर टाइम ज्यादा है तो फोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाता है. अगर टाइम लेस है तो फोर्स का इम्पैक्ट भी ज्यादा होता है, बिकॉज फोर्स इज m into a. व्हाट इज a? v minus u upon t. v is final velocity, u is initial velocity and t is time. Now we'll discuss the first example. Whenever you are catching a cricket ball, generally तुम देखा होगा मैचेस में भी,
whenever there is a ball coming from a very high speed, जितने भी bowlers होते हैं, they do not catch it like this. They bring their hand down and try to catch it, right? So hand down करने से क्या होता है? Whenever they are, rather than catching the catch here, catching the ball here, they slightly move down. This incident and this incident increases the time. Increases the time means अगर हमने t को increase कर दिया in inversely proportional, if we increase that time, then the ball will exert less force on the hand. If the player is trying to take the catch in air, then there are chances that his hand may get injured, because जो accelerate, जिस बॉल में बहुत सारा एक्सेलरेशन है और मास भी है, इट विल पुट अ फोर्स ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर. सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट, हाथ पे तो तब भी लगने वाली है, जर्क तो तब भी लगने वाला है उसको, बट इफ ही इज इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ दैट कैच, यहाँ की बजाय जब उसने नीचे पकड़ा है ये कैच, यू आर इंक्रीजिंग द टाइम. एंड व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द टाइम, वो जो फोर्स के साथ बॉल जो फोर्स लगाने वाली थी हाथ पे, दैट इम्पैक्ट ऑफ फोर्स रिड्यूसेस. That impact of force reduces. Hence, the bowler or the person who is catching the ball takes the help of Newton's second law of motion to reduce the impact of force which was coming on the ball along with the ball. Ball का momentum बहुत high है. Do you agree? We can also change it in this way. थोड़ा better समझ में आएगा. इसको m को multiply कर दो, mv minus mu upon t. ये इनिशियल मोमेंटम है. दिस इज इनिशियल मोमेंटम, दिस इज फाइनल मोमेंटम. अभी जो जिस बॉल मोमेंटम से जो आ रही है बॉल, इट हैज वेरी हाई मोमेंटम क्योंकि वो एयर में है, उसका वेलोसिटी है. मोमेंटम इज m इंटू वी, उसका वेलोसिटी बहुत हाई है, उसका मास भी है, तो m इंटू वी मतलब बहुत ज्यादा मोमेंटम है. व्हेन यू आर स्टॉपिंग द बॉल, द केस यू आर स्टॉपिंग द बॉल, व्हाट विल बी द मोमेंटम? 0. तो ये जो मोमेंटम से जो बॉल आ रही थी, आप उसका मोमेंटम यू वांट टू रिड्यूस इट टू 0. एंड व्हेन यू वांट टू रिड्यूस इट टू 0 इन स्मॉल टाइम, force will be more. Now if you are taking the catch here, then also you are reducing the momentum to 0, but in that case you are increasing the time. When you are increasing the time, force is inversely proportional. So जो force पहले लगाने वाली थी बॉल, that force will reduce. उस फोर्स का इम्पैक्ट आपके हाथ पे कम हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द वेरी वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट? सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट हाई जंप, right? So you must have seen this gymnastics and athletes. So when they are taking high jump, ऐसा नहीं होता कि ये समझो यहाँ पे उन्हें जंप करना है एंड वो यहाँ पे खड़े होकर सीधा सीधा जंप करेंगे एंड यहाँ पे आएंगे. That doesn't happen. They have to run some distance, run and so that their body comes in the state of motion. बॉडी का मोमेंटम बढ़ाते हैं और जब बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में आ जाती है, विद दैट हाई मोमेंटम दे टेक द हाई जंप. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पर्सन यहाँ पे खड़ा है एंड ही इज टेकिंग हाई जंप एंड कमिंग ऑन दोज कुशन्स एंड ऑल. नो. सिमिलरली व्हेन ही इज रनिंग एंड वेयर एवर ही इज जंपिंग, राइट? जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन. Yes, whenever a person is taking a high jump and he is jumping over here, तो यहाँ पे क्या होता है? Either there is a sand heap or there are cushions. Cushions क्यों होते हैं? Whenever a person is taking a high jump, he always falls on a heap of sand or cushions. By having cushions or heap of sand, what actually happens? See, अगर यहाँ पे सीमेंटेड फ्लोर होगा तो ये जो मोमेंटम से बॉडी आ रही है, the momentum becomes 0 in very less time. And when momentum becomes 0 in very less time, impact of force will be very high. Impact of force will be very high means, the body will get injured, or the chances of getting injury is more. Whenever there are mattresses or heap of sand or any cushioned surface, so that time what will happen? That time the person, ये जो जर्क लगने वाला है या कुशन्स भी जो नीचे जाने वाले हैं,
You are increasing the time of impact, and when you are increasing the time, the force on the body will be less. That is why a person for long jump, or say a person is jumping from some height, if there are cushions or if there is sand heap, that increases the time of reaction, and when that increases the time of reaction, the impact of force reduces and the body will not be having any injuries, right?